Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study about very mysterious syndrome that has been identified in many of the USA officials recently, and that is the Havana Syndrome. This is really important for prelims. All these biochemical attacks, all these microwave weapons based attacks, all these viruses which are in news since 2019 December month till today. These are really important for you to understand as a diplomat. You are going to be a diplomat one day, right? After clearing this exam, you will be a civil servant. Some of you might be joining the IFS, Indian Foreign Services, Indian Forest Services, Indian Administrative Services, Indian Police Services, Indian Revenue Services, Customs, this and that. And for all these duties, you should be knowing about all these viruses, these weapons that the countries are using against each other. You should be aware of them. And also from the exam point of view, it's important, really important. Okay, so today we are going to study about the Havana Syndrome, which has been in news. So this is going to be important for those who are preparing for 2022 prelims, mains and interview, 2023, 2024, and for 2021 aspirants. This is important for mains, GS paper 3, okay, and GS paper 2. तो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप मेंस की बात करो, तो ये मेंस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप 2022, 23 या 24 की तैयारी कर रहे हो, then this topic is obviously important. You cannot skip it. So let's get started. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है, समझते हैं कि हवाना सिंड्रोम क्या है. यूएसए के कुछ 130 ऑफिशियल्स को हुई है ब्रेन इंजरी इस माइक्रोवेव वेपन के यूज की वजह से. किसने यूज किया, क्या इसका क्या इसका वर्किंग मैकेनिज्म है जिस वजह से इंजरीज, ब्रेन इंजरीज लोगों को हो रही है, और कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास ये माइक्रोवेव वेपन्स पाए जाते हैं. व्हाट आर दी कंट्रीज हैव दीज माइक्रोवेव वेपन्स इन पोसेशन राइट नाउ, because that is also very dangerous. So let us understand. The PDF of this lecture will be uploaded on my Telegram channel. Simply find UPSC videos. So if we look at the news, nearly 4 years ago, a mysterious neurological illness referred to as the Havana Syndrome, it started to afflict American diplomats. Now the point here to be noted is that it was affecting the American diplomats and the intelligence operatives which were posted in Cuba, okay, or China and other countries. तो ये हवाना सिंड्रोम जो है, ये एक तरीके का आप यहाँ पर लिख सकते हो न्यूरोलॉजिकल इलनेस है और मिस्टीरियस है. कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या ओरिजिनेशन है, ये अभी मिस्टीरियस है. ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ मिस्टीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस, हवाना सिंड्रोम. और ये स्टार्ट हुआ जब अमेरिकन डिप्लोमैट्स, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो क्यूबा, चाइना में और बाकी कंट्रीज में पोस्टेड थे, उन्होंने ये रिपोर्ट करना शुरू किया. Now there is a report also by NES, National Academies of Sciences, which has found directed microwave radiation to be its plausible cause. सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा अभी यकीन किए जाने वाला जो कॉज है वो है माइक्रोवेव रेडिएशन, जो डायरेक्ट किया गया इन ऑफिशियल्स के तरफ. Okay, this microwave radiation was directed towards these officials, and that is how this Havana syndrome was reported nearly 4 years ago. Now this has been found out or explored by the National Academies of Sciences report. NAS की जो अभी फिलहाल में रिपोर्ट निकली है, उन्होंने इस रिपोर्ट में ये बात की है कि जो मिस्टीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, ये हुई कैसे है. किसी ने माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल किया है इन डिप्लोमैट्स के तरफ, ओके, इनके डायरेक्शन में, जिस वजह से इन्होंने इस तरीके की डिजीज को एक्सपीरियंस किया है और रिपोर्ट किया है. सो इन लेट 2016, USA diplomats and intelligence employees, they were stationed in Havana, which is the capital of Cuba. ठीक है, हवाना कहाँ है, क्यूबा के कैपिटल में है, क्योंकि वहां पर ये डिजीज रिपोर्ट हुई है, इस वजह से इसको हवाना सिंड्रोम बोलते हैं, बिकॉज इट हैज बीन आइडेंटिफाइड इन हवाना, सो इट इज नोन एज हवाना सिंड्रोम. So in 2016, these USA diplomats and intelligence agents, they reported feeling ill after hearing strange sounds and experiencing odd physical sensations in their brains, in their head, in their forehead. तो हुआ क्या है, देखो, एक जने को हो तो हम समझे नहीं, जब सभी यूएसए डिप्लोमैट्स इस तरीके का एक्सपीरियंस करने लगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज हो गया. So they reported that they were feeling ill. They reported that they are hearing very strange bursts, very strange sounds of bells, of bombs, like bomb जैसे साउंड होता है ना, जैसे कहीं बॉम्ब ड्रॉप करते हैं तो जिस तरीके का धमाका होता है,
ऐसा धमाका इनको अपने हेड में सुनाई देने लगा. And they were experiencing very odd, very different kind of physical sensations in their body, in their brain. The symptoms included nausea, यानी कि इन्हें उल्टी जैसी आने लगी, उबकाई आने लगी, severe headaches, fatigue, बहुत थकान होने लगी, dizziness, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, उठा नहीं चला नहीं जाता, ठीक है. Sleep problems, सोने में दिक्कत होने लगी उन sounds की वजह से, because of those sounds, and hearing loss also. So that is why, because it was reported in Havana in Cuba, it is known as the Havana Syndrome. There were many other chronic problems also. For example, insomnia, नींद ही नहीं आ रही है, cognitive problems, a headache, vestibular processing issues, and these symptoms have resolved for some of the affected employees, but the others, still the symptoms are there in their body, because of which their normal functioning of life has been very severely affected. The officials said that there is a visual disturbance, उन्हें देखने में दिक्कत हो रही है, difficulty in concentrating, memory retention, उन्हें कुछ याद नहीं रह पा रहा है, depression, impaired balance of body, ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, body का balance maintain नहीं कर पा रहे हैं. Okay, these were the symptoms that were reported, you can see. Here you can see in this chart, ये PDF में available है. Okay, so you can look at the symptoms. They were also, experiencing a very intense pressure or vibration inside their head. Okay, now the NES report examined 4 possibilities in this case to explain the symptoms. देखो 4 तरीके की NES report is not directly hinting that there is a microwave, weapon that has been used. There are 4 possibilities when it comes to this kind of syndrome. 4 तरीके की possibilities है, 4 reasons की वजह से हो सकता है. First is infection, हो सकता है किसी तरीके का क्यूबा में इन्हें infection हुआ हो. Second is chemicals, किसी तरीके का chemical लोचा हुआ है बॉडी में, या किसी तरीके की ड्रग प्रिस्क्रिप्शन गलत हो गई है. Third, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, उन्हें अजीब सी आवाजें आ रही हैं, हो सकता है उनका वहम हो सकता है साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत हो जिसका ट्रीटमेंट की जरूरत हो. एंड फोर्थ, माइक्रोवेव एनर्जी. देखो ऐसे ही नहीं माइक्रोवेव एनर्जी का यहाँ पर नाम दिया गया है, बिकॉज यूजिंग द माइक्रोवेव एनर्जी लाइक दिस इन अ पर्टिकुलर पर्सनल डायरेक्शन can also lead to these symptoms. So far only this report provides the clearest estimation of what may have happened with these officials. इन officials के साथ क्या हुआ है, क्यों इनके दिमाग में इस तरीके की problems चल रही हैं, क्यों उनको ऐसे neurological problems आ रहे हैं, issues आ रहे हैं. तो इस तरीके की जो clear हमें estimated report दी है वो NES की report में ही दी है. ठीक है. So in earlier attempts by various other government agencies, scientists also talked about psychological illness. Stressful environment होता है ना, because they have left their own country, they are based in a foreign country. So that is why it might be a result of psychological illness also. But the countries which are gathering such kind of weapons, they might be using those weapons on their enemies. Okay. तो माइक्रोवेव एनर्जी की जब बात करते हैं इस पे इंफ्रासोनिक कैनन यूज होता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज आल्सो. दिस इज द एनिमी पर्सनल स्लीपिंग एंड ही इज द टारगेट एंड दे डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द टारगेट्स दिस लोकेशन. So shoulder fire device that produces ultra or infrasonic waves can affect both living and non-living material also. You see our brain, it is very extremely powerful and it is capable of catching any energy that is around us. हमारा जो brain है ना, देखो somebody is crying. If you are looking at that person, the other person is weeping very, very, badly, you will also get affected. You will also get impacted. जब कोई आपके सामने बैठ के रो रहा है, तो आपको भी दुख होता है ना कि अरे इसको कोई दिक्कत हो रही है, रो रहा है, कोई मुसीबत में है. Why this happens? Why you get impacted? Because your brain has the power, has the capability to, attract the energy of people or of objects around you. Similarly, if you watch a comedy movie, you laugh. Right, and that happiness, that peace lingers on in your brain for quite a few times, right? For quite a few hours. होता क्या, जब आप कोई अच्छी मूवी देखते हो कुछ घंटे तक आप खुश मूड में रहते हो, क्यों? वो एनर्जी कैप्चर कर लेता है आपका ब्रेन. यहाँ पर माइक्रोवेव एनर्जी, इतनी ह्यूज एनर्जी जब आपके डायरेक्शन भेजी जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो कैप्चर्ड बाय योर ब्रेन. नाउ हियर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कॉजेज द हवाना सिंड्रोम. किस वजह से ये हवाना सिंड्रोम होता है? इट इज डायरेक्टेड पल्स्ड RF एनर्जी appears to be the most plausible mechanism in explaining these cases. ये जो इंफ्रारेड या अल्ट्रासोनिक एनर्जी है, ये डायरेक्ट किया जाता है जिसके ऊपर आपको ये अटैक कैरी आउट करना है. एंड व्हाट आर द इमीडिएट सिम्टम्स दैट अ पर्सन कैन फील इफ दिस एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज और हर डायरेक्शन? Sensation of pain, buzzing sound in the brain, etc.
So before we move forward, with a small announcement for all of you. As you know that every Sunday, Unacademy launches Unacademy Combat, which is all India free scholarship test. You can stand the chance to win a scholarship from a pool of rupees 4 crore. अगर आप रैंक 1 से 3 लेकर आते हो इस कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो आपको 1 साल का यूपीएससी का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप रैंक 4 से 10 लेकर आते हो तो आपको 75% स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से मिलेगी। रैंक 11 से 50 वाले स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी एंड रैंक 51 से 500 वाले स्टूडेंट्स को 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अरे हमें तो टॉप 10 में ही आना है, टॉप 5 में ही आना है। आप टॉप 500 में आओगे तो आपको अनअकैडमी अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देने की गारंटी देता है। एंड दिस कॉम्बैट इज कंडक्टेड एवरी संडे एट 11 AM इन द मॉर्निंग। हर संडे 11 बजे मॉर्निंग में ये कॉम्बैट कंडक्ट किया जाता है। 60 मिनट्स का टेस्ट होता है, 56 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन 60 मिनट्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द सेम लाइंस ऑफ दैट ऑफ प्रीलिम्स। जैसे कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम है ना, सारे सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स इंक्लूडेड, वही सेम पैटर्न पे आपका कॉम्बैट है। So what you have to do is download the Unacademy learning app, then click on the link which is given below in this video in the description box and use the invite code ARPITA10 to get yourself enrolled for free. Now the question is, what are microwave weapons? ये microwave weapons होते क्या हैं? Because this is important. Chemical weapons है, biochemical weapons है. Now this is the third category, microwave weapons. So these are supposed to be a type of direct energy weapons. As I showed you over here, ये जो है, this is direct energy weapon. Okay, that is a microwave weapon which aim highly focused energy in the form of sonic, laser or microwaves at a target. एक target की तरफ direct energy जो microwave weapons है ये shoot करते हैं. This is the target. Okay, and this is the microwave weapon which is shooting direct energy in a targeted position. The high frequency electromagnetic radiations are launched by this weapon. हाई रेडिएशन के हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डायरेक्ट किया जाता है। ओके, सो द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे हीट द वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। आपकी ह्यूमन बॉडी में जो वाटर है उसको गर्म कर देते हैं ये रेडिएशंस, जिससे आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, आवाजें आने लगती हैं, वाइब्रेशन होने लगती है, बैलेंस हटने लगता है, डिस्कम्फर्ट होता है। एंड इट वर्क्स द सेम वे एज द किचन अप्लायंस। जैसे माइक्रोवेव आपका काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये माइक्रोवेव वेपन आपकी बॉडी पर काम करता है। सो इन अ माइक्रोवेव ओवन देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब व्हिच इज नोन एज मैग्नेट्रॉन व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू हीट योर फूड। ओके, आपका फूड उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे वो गर्म होने लगता है। द माइक्रोवेव एजिटेट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फूड। आपके खाने में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको ही गर्म करता है, हीट करता है, जिससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है जो आपके खाने को कुक करता है। तो वो खाना उस तरीके के फूड प्रोडक्ट्स जिसमें वाटर क्वांटिटी बहुत हाई है, जैसे कि दाल हो गई, आप गर्म करते हो माइक्रोवेव में, केक हो गया, तो उस केस में ना वो चीज जल्दी कुक हो जाती है माइक्रोवेव में। ठीक है, ड्रायर फूड से अगर हम कंपेयर करें। सिमिलरली आपकी बॉडी में आप देखोगे 75% से 80% वाटर जो होता है वो फटाफट फिर वो गर्म होने लगती है आपकी बॉडी, वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होने लगते हैं, जिससे आपकी बॉडी में पेन, आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट चालू हो जाता है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट आर द कंट्रीज हु हैव द माइक्रोवेव वेपन। सी, चाइना इज वन ऑफ देम। चाइना ने अपना माइक्रोवेव वेपन 2014 में डिस्प्ले भी किया था, कॉलिंग WB1। ओके, एंड यूएसए हैज आल्सो डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप माइक्रोवेव स्टाइल वेपन व्हिच इट कॉल्स द एक्टिव डिनायल सिस्टम। एक नॉन लीथल वेपन है। यूएसए तो ये बोलता है कि ये नॉन लीथल है, डेंजरस नहीं, ठीक है, बट अभी फिलहाल यूएस और चाइना दोनों के पास ही ये माइक्रोवेव वेपन्स हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हवाना सिंड्रोम। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सो मेक श्योर दैट यू स्टडी दिस इन ग्रेट डिटेल। ओके।